Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस विषय रे पढिबा देखो आमे जेतोले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विषय रे पढितला तो सेठी हमें देखिला इवेंट देन ऑब्जर्वर तापर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली एटा होची रिलेशनशिप जेतेबेले हमें दुईटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कथा कहिबा सच दैट गोटे फ्रेम रेस्ट रे रहिबो आ गोटे फ्रेम मूव करिवो किंबा बोथ विल बी मूविंग ओके सो दैट हमें कंपेयर करिबा तांकर जो पोजीशन आउ टाइम ओके अच्छा so for this let us consider an event which is occurring in a certain frame of reference at a certain point suppose ताको हमें characterize करला with 3 position coordinates and certain time okay time coordinate भी दे देला now it is always of considerable interest to know how the event appears to be when looked from another frame of reference जेमती कहली for example जेमती कि हमें गोटे बस रे जाउछु सो बाहर जो सब जिनस रास्ता रे हमको गछ गुडा सेटा मूव कला बलिया देखा जाए ओके सो दैट इज अ टाइप ऑफ रिलेटिविटी ओके किंतु एक्चुअल रे कोन बस मूव करूची से जा भी हो सो द ट्रांसफरेंस ऑफ observation of an event from one frame to another is said to be Galilean transformation if the following conditions are fulfilled okay number 1 रे एठी कहूची the two frames of references should be inertial तापरे number 2 रे कहूची in the beginning माने at initial time t equal to 0 their origins should coincide then third point रे जदि हमें दुईटा घड़ी नबा ताकू प्लेस करके रखिबा in the two frames then they will measure at the same rate okay अच्छा now let us see the figure एठी देखो आमे दुईटा इनर्शियल फ्रेम्स नेबा एस आउ एस डैश बा एस प्राइम ओके एस ही गला एठी ओ एक्स वाई जेड आउ एस डैश बा एस प्राइम ही गला ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश okay such that the two frames are having their origins at O and O माने initially तांकर origin coincide करथला okay at time t equal to 0 now for simplicity of the problem suppose हमें कहिबा जे ए जो s dash frame अछि एटा okay suppose it is moving with uniform velocity v with respect to s in such a way that their x axis always remain coinciding okay so हमें कहिबा एठी x आउ x dash एटा coincide करूची ताले एबे origin टा डिस्प्लेस हे गला s पई हे गला o s dash पई हे गला o dash okay in time suppose t ताले हमें लिखि परिबा o dash to be equal to vt this one okay or we can also write it to be vt dash एठी हमें t equal to t dash नेबा because दीटा जाको घड़ी दीटा फ्रेम रे जो रखी जो हमें जदी they will measure the same time okay एठी एटा कहूची t and t dash are the times as recorded by the observers in the two frames now let us consider an event गोटे event हमें नेबा which is occurring at a point p now this event is characterized by the coordinates x y z t okay so accordingly o ru distance हमें निगला p रो to be equal to r okay our o dash ru equal to r dash
आउ एठी देखो एस फ्रेम रे आमे यार कोऑर्डिनेट को कहूछु एक्स वाई जेड टी। सिमिलरली एस डैश फ्रेम रे यार कोऑर्डिनेट को आमे रिप्रेजेंट कर देबा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी। ओके सो जेमती कहली ओ पी आउ ओ डैश पी को आमे जदी जॉइन कर देबा आमे पोजीशन वेक्टर पाइबा which will be r and r dash. Okay, these are the position vector of p in the frame s and s dash. Okay, acha, now from the triangle o o p dash, okay এটি টিকে প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, এটা o o dash p হবো। okay so o o dash p মানে this triangle। okay তো এই triangle রে এবে লক্ষ্য কর মু এটি পিকচারে ইয়াকু ডেসক্রাইব করছি। सो एटा हूँ गोटे वेक्टर ट्रायंगल, तेणु आमे एठी लिखिपर देख ओ रु पी आड़ को आर रो डायरेक्शन, सिमिलरली ओ डैश रु पी आड़ को आर डैश रो डायरेक्शन, आउ ओ रु ओ डैश आड़ को एटा डायरेक्शन। ओके ता माने एठी आमे लिखिपर आर डैश टू बी इक्वल टू आर माइनस वी टी, किंबा ये जो आर अच्छी दिस आर इज इक्वल टू this r dash plus this vt हबो। अच्छा एटा होची ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, से जिनसटा एठी लिखा हिची r dash equal to r minus vt। एबे देखिबा हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। देखो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द फ्रेम s dash, because s dash ही मूव करूची along x axis, so s and s dash remain coinciding। okay now therefore the y coordinate and z coordinate do not change। okay and there is a change only in the x coordinate। okay so आमे क्लियरली ए डायग्राम रो जानी परिबा जे x डैश रो वैल्यू केवल चेंज हबो टू बी इक्वल टू x माइनस vt हे जिवो, किंतु बाकी जते सब कोऑर्डिनेट टा अनचेंज्ड रहिबो। y dash equal to y, z dash equal to z, और t dash equal to t। कहीं बिकॉज s dash मूव करुची along x axis, तेणु y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट और टाइम ये सब समान रहिबो, अनचेंज्ड रहिबो। सो ए जो इक्वेशन 2 आमे पाइला, इट गिव्स the coordinates of an event in the frame s dash when its coordinates in the frame s are known। so these transformations are known as direct Galilean transformation for position। okay now the transformation of coordinates from the frame s dash एबे जदि उल्टाटा करिबा to the frame s। okay so एटा s dash हबनी, एटा s हबो। ओके एमती छोटो मोटो प्रिंटिंग मिस्टेक मु देखा पाऊँ जोटा मो आखिरे आसला मु एडिट करदेवी परे। ओके सो जदि आमे उल्टा जिनस करिबा देन इट विल बी कॉल्ड inverse transformation। so in this case the frame s appears to be moving। जो जिनसटा मु एग्जांपल दउथली जे बस मूव करूची, किंतु आमे बस भितरु देखले जणा पड़िबो जे बाहर थिबा गछ गुडा मूव करूची। so the frame s appears to be moving towards left with a velocity obviously minus v। then inverse transformation equation आमे लिखि परिबा x equal to x dash minus vt dash, आउ बाकी सब कोऑर्डिनेट अनचेंज रहिबो पुणी पूर्व बलिया। सो y equal to y dash, z equal to z dash and t equal to t dash। एबे देखिबा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस। देखो फॉर दिस आमे गोटे रॉड कंसीडर करिबा ए बी। ओके व्हिच इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम s and s dash, एठी भी एटा s हबो। ओके सो आमे ऑलरेडी देखुछु जे s dash मूव करूची विथ ए वेलोसिटी v along x axis। okay with respect to s। now आमे एठी कोन करिबा रॉड को ए हिसाब रे रखिबा जे एटा पैरेलल रहिबो with x axis। okay so that ox और ox dash सहित ए रॉड ए बी पैरेलल रे रहि गला। therefore y और z कोऑर्डिनेट ए बी रो कांस्टेंट रहिबो, चेंज हेबो नाही इन बोथ द फ्रेम्स, केवल तार x कोऑर्डिनेट चेंज हेबो। सपोज आमे कहिला x1 एंड x2 ये हिगला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स a and b as observed from the frame of reference s। similarly x1 dash आउ x2 dash ये हिगला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स a and b as observed from the frame
एस डैश ओके ये सबूरे भी देख डैश रहीनी एटा मु एडिट करी पर ओके नाउ अकॉर्डिंग टू Galilean ट्रांसफॉर्मेशन आम ए रिलेशनशिप जोटा ऊपर देखुला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन से हिसाब रे लिखि परिबा x1 डैश रो वैल्यू हबो x1 माइनस vt x2 डैश रो वैल्यू हे जिवो x2 माइनस vt ओके एठी t हे गला द टाइम टेकन and it will same in both the equation okay and now assuming that the observations are made simultaneously एका संगे observation जदि आम करूचु बोली एज्यूम करिबा ताले ए टाइम टा समान रहइबो सपोज ए जो रॉड आम नहींचु तार लेंथ आम नहीं गला l डैश ओके l डैश गला लेंथ ऑफ द रॉड एज ऑब्जर्व्ड इन द फ्रेम s डैश ताले এই जो l डैश रो वैल्यू केते हला x2 डैश माइनस x1 डैश ताले याकू जो x2 डैश और x1 डैश रो जो वैल्यू आम पाइचु ऊपर ताकू जदि पुट करिबा ताले l डैश रो वैल्यू केते हला शेष रे ए vt प्लस माइनस कैंसिल होगी x2 माइनस x1 हेबो व्हिच इज नथिंग बट l एटी l हेगला x2 माइनस x1 व्हिच इज द लेंथ ऑफ द रॉड एज ऑब्जर्व्ड इन द फ्रेम s ताले आमे कोन पाइला जे लेंथ टा रॉड रो unchanged रहुची okay so anything which remains unchanged when observed from two Galilean frames of reference is known as a Galilean invariant okay so here the length of the rod is a Galilean invariant okay hence we can say the length or distance is said to be a Galilean invariant and the same result can also be carried out using inverse transformation ओके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करले मध्य हमें सेम रिजल्ट ही पाइबा देन थर्ड पॉइंट रे देखिबा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर दिस लेट अस कंसीडर अ बर्ड गोटे पक्षी व्हिच इज फ्लाइंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन सपोज पैरेलल टू x एक्सिस ऑफ s एंड s डैश सपोज आम कहला जे u आउ u डैश हेगला वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय टू ऑब्जर्वर्स who are sitting respectively at O and O dash ताले the equation जोटा कि एई दुई वेलोसिटी को कनेक्ट करिवो ताकू आमे Galilean transformation equation for velocity बोली कि कहिबा सो याकू आमे डेराइव करि परिबा लाइक दिस सपोज पॉइंट P हेगला पोजीशन ऑफ द बर्ड एट एनी इंस्टेंट आउ R आउ R dash हेगला इट्स पोजीशन वेक्टर ओके विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O and O dash respectively ताले आमे ऑलरेडी पाई सारिछु r डैश रो वैल्यू r माइनस vt एबे याकू डिफरेंशिएट करिबा विथ रेस्पेक्ट टू t हमरो एम हैला वेलोसिटी बाहर करिबार अछि सो dr डैश बाय dt इक्वल टू dr बाय dt माइनस v आइठी dr डैश बाय dt हे गेला u डैश सिमिलरली dr बाय dt हे गेला एठी u सो दैट आमे पाइला कोन ना u डैश इक्वल टू u माइनस v व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन so এই ইকুয়েশন কোন জনা পড়ছি যে velocity of a bird as observed by the observers in the two frames are not same length देखो या पूर्वरु सेम होतला किंतु velocity टा समान आसु नाही hence the velocity of a body is not Galilean invariant एटा invariant बा constant रहिबो नाही ये डिपेंड करिवो frame of reference उपरे so using the inverse transformation आमे एठी मध्य बाहर करि परिबा जे u इक्वल टू u डैश प्लस p ए बडा भी बाहर करि परिबा ओके फोर्थ पॉइंट रे एबे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन को देखिबा सो अगेन आमे कंसीडर करिबा अ बर्ड व्हिच इज फ्लाइंग पैरेलल टू x एक्सिस ऑफ द टू फ्रेम्स नाउ with a variable velocity having a constant acceleration because acceleration पाई हमको नियाती भाव रे velocity को vary करिबा को पड़िबो constant velocity हेगले तो acceleration 0 आसी जिवो तेनु आमे एठी variable velocity नेबा suppose एठी acceleration आमे कहला a आउ a dash okay of the bird as observed by two observers in the two frames okay now the relation between them is said to be Galilean transformation equation for acceleration so ऊपर हमें जो u dash रो वैल्यू पाइला इक्वल टू u माइनस vt जो आस्तला ओके सॉरी इक्वल टू u माइनस v ए रिलेशन याकू हमें कोन करबा आउ थरे डिफरेंशिएट करबा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t ताले du dash by dt इक्वल टू
du by dt minus d by dt of v ହେଇଗଲା। सो एठी जेहेतु v होची velocity of s with respect to s dash, ओके velocity of सॉरी एटा हो तमरो s dash with respect to s, एटा जेहेतु कांस्टेंट तेणु करी ए क्वांटिटी 0 हो जिवो। ओके सो दैट du dash by dt रो वैल्यू हैला केते इक्वल टू du by dt which is nothing but acceleration। so a dash यार वैल्यू a, तेणु आमे पाइला कोन a dash equal to a, that means the acceleration of a body as observed by two observers sitting in two inertial frames will be same, or in other words acceleration is said to be a Galilean invariant। ତେଣୁ ଏଟା constant ରହୁଛି, change ହଉ ନାହିଁ with respect to your frame of references। okay, thank you।